Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of April. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about India's record cargo movement on the inland waterways. We will be discussing about the various inland waterways. Then we will be talking about Odisha's Simlipal officially declared as the India's 107th national park. Next thing we will be talking about is the Time Higher Education Asian University ranking for 2025. Then UNDP, they have joined the global network to help the countries cope with the climate change. All these news and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, so do watch this video. This is quite important. Also, if you are new to our channel, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs, students. India's record cargo movement on inland waterways. So recently, Noida UP based Inland Waterways Authority of India has released a data that stated about the record cargo movement that was worth 145.5 million tons of goods that were transported this inland waterways, right? This is an increase of almost 18.1 million ton compared to, or basically this is in FY25, right? If we talk about FY14, it was 18.1 million metric ton. So you can see almost 10 times jump has been seen here. Correct. And out of the total cargo movement on these national waterways during FY25, 5 commodities were the major contributor here. They were coal, iron ore fines, sand and fly ash. It contributed almost 68% of the content here. Also, the passenger movement has also reached 1.61 crore rupees in 23-24. Right? There are certain inland waterways that I need you to remember first. Just go through them. These are NW1, National Waterways 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 68, 73 and 110. Then apart from this, in order to boost the inland waterways, some initiatives were launched, such as your Jalwahak. This is the cargo promotion scheme. This was launched on 15th of December with an allocated budget of 95.42 crore rupees that consists of 2 main components, that is financial incentive and scheduled services. Then next is the extension of the tonnage tax to inland vessel, right? In order to the tax burden and to reduce the tax burden and encourage the broader adoption of inland shipping, stable and predictable tax regime was provided. As if it is a stable and predictable tax, then it becomes easy for the traders also, right? The manufacturers also, right? To procure that product and transport it. Then next is your regulatory framework for private investment, right? In order to promote private investment in this inland waterway sector, right? Regulations were brought, proper regulations, registered regulations were brought. Then you will be seeing cargo aggregation infrastructure has also been built. Then digitization and centralized database has been built. Then port integration has been done in order to boost the inland waterways transport. Moving on, next is Odisha's Simlipal officially declared as India's 107th national park. Correct? And this is the Odisha's second protected area that has been declared as national park. First was Bhitar Kanika. Correct?
It was declared as national park in 1998, and now this is Odisha's Simlipal, right? It has been declared as the 107th national park, correct? And second from Odisha. Take a note of this. Moving on. Next, international affairs. THE, that is your Times Higher Education. So THE Asia University Ranking 2025 was released here, students. Let me show you the recent rankings first. On the first position is Tsinghua University of China, that secured the first position. Second, Peking University of China. Third, National University of Singapore. Fourth, Nanyang Technological University of Singapore. And fifth is the University of Tokyo of Japan, right? This is the worldwide ranking, right? These are the top 5 institutes. If we are talking about India, right, from India there are some universities that you need to remember. It is on 38th position is IISc, Indian Institute of Science. On 111th position is the Anna University, that is located in Chennai, Tamil Nadu. This IISc is in Bengaluru, Karnataka. Then on 131st position is IIT Indore, that is located in Indore, Madhya Pradesh. At 140th position, Mahatma Gandhi University, that is in Kottayam, Kerala. And on 146th position is Shulini University of Biotechnology and Management Science, that is in the Bajol in Himachal Pradesh. So these are the Indian rankings, these are the global rankings, and it is the Times Higher Education Asia University ranking that was recently released. Take a note of this, and this is the 13th edition of this Asia University ranking that was launched by THE. This THE is London UK based company. Next is UNDP, United Nations Development Program, has joined the global network to help countries cope with climate change, right? So recently it is UNDP, correct? That is United Nations Development Program. It is New York, USA based, and they have joined the Santiago Network. Correct. So which organization recently joined the Santiago Network? It is UNDP. And what is this Santiago Network? This is a network that was established by UNFCCC in 2019. The aim of which was to bring various organizations, networks, experts to provide the implementation of solutions that will avert, that means that will reverse, minimize and address the loss and damage due to the climate change. And this marks a significant step that United Nations Development Program has now joined this Santiago Network. Question can be asked that Santiago Network launched when? In 2019. Which organization recently joined it? It is UNDP. And who is the administrator of UNDP? Akim Steiner. Headquartered in New York, USA. Established in 1965. Next is banking and finance. It is EEMF, that is Edelweiss Mutual Fund, right? EMF, right? Edelweiss Mutual Fund, also known as the Edelweiss Asset Management Limited, that is a subsidiary of Mumbai, Maharashtra based Edelweiss Financial Service Limited, correct? They have announced the launch of Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund, right? So an index fund has been launched, that is India's first BSE Internet Economy Index Fund, and this will offer exposure to the BSE Internet Index Economy. This scheme's investment objective is to provide returns before the expenses that closely correspond to the total returns of the BSE Internet Economy TRI, Total Return Index, subject to tracking errors. Right here, this is an open-ended index fund replicating the total return index. The new NFO will open for subscription on 25th of April and close on 9th of May. And BSE Internet Economy Index comprises the top 20 companies selected from BSE 500 based on their 6-month average market capitalization. Here, the investors can invest a minimum of 100 rupees and further after in a multiples of 1. And here, there is no exit load will be charged if the units are redeemed within after 30 days from the date of allotment, right? And who are the fund managers here? There are 2 fund managers, Bhavesh Jain and Bharat Lohoti, correct? And who is the managing director and chief executive officer of Edelweiss Mutual Fund? Radhika Gupta, you must have seen her on Shark Tank. Next is RBI has cancelled the license of Ajanta Urban Cooperative Bank due to capital and compliance
issues. I repeat, RBI has cancelled the banking license of Aurangabad, Maharashtra-based Ajanta Urban Cooperative Bank Maryadit under Banking Regulation Act of 1949. This is because of inadequate capital, poor earning prospects, and non-compliance with the regulatory norms. Right, and upon liquidation here, each depositor is entitled to receive up to 5 lakh rupees. Next is awards and recognition. Indian filmmaker Payal Kapadia, as you can see here in the picture here, conferred with the France highest award, right? France Civilian Award for Cinematic Brilliance. And you can see this is the award that she has been conferred with, and this is for her contribution to cinema, right? And this is the France highest civilian honor in the field of arts and literature. Next is ACI-GAR. What is this ACI-GAR? ACI is your Airport Council International. GAR is your Green Airports Recognition, right? So this ACI-GAR 2025 was awarded recently, and Hubali Airport has achieved the platinum status among the 3 Indian honorees here. So Hong Kong, China-based Airport Council International, Asia Pacific and Middle East, they have announced the winners of the 9th Green Airport Recognition 2025. Green Airport Recognition 2025. These awards were announced. This was during the regional assembly that was held in New Delhi. And here, 3 airports operated by Airport Authority of India has been recognized under the GAR 2025. Correct? That is, and among them, it is Hubali Airport that has achieved the platinum status among the 3. Apart from this, which are the 3? Hubali Airport, that is in Hubali, Karnataka. Then is your Kempegowda International Airport in Bengaluru, Karnataka, and Cochin International Airport located in Kochi, Kerala. So these are the 3 airports from India. Next, appointments and resignation. Sunil Bharti Mittal has joined the World Bank Group's private sector investment lab to boost the developing economies, right? So recently it is Sunil Bharti Mittal, correct? And here he has joined the World Bank Group's private sector investment lab to boost the developing economies. Here various solutions will be found, right, where the private investors can invest money in develop the underdeveloped economies, help them generate job in those developing nations. Correct? Take a note of this. If we talk about World Bank, it is who is the president of World Bank? Ajay Banga. Headquartered in Washington DC, established in 1944. Next is Bhuvnesh Kumar appointed as the CEO of UIDAI, and KK Pathak named the additional secretary in the cabinet secretariat. I repeat, Bhuvnesh Kumar has been, as you can see him in the picture, has been appointed as the Chief Executive Officer of UIDAI, that is Unique Identification Authority of India. And here KK Pathak, he has been appointed as the additional secretary in the cabinet secretariat. If we look at the appointment, Bhuvnesh Kumar, a 1995 batch IAS officer of UP cadre, named as the CEO of UIDAI. He will be replacing Amitesh Kumar Sinha. And senior IAS officer Abhishek Singh of 1990 batch from Nagaland cadre has been appointed as the Director General of National Informatics Center. And apart from this, third appointment is KK Pathak, that is Keshav Kumar Pathak, a senior IAS from Bihar cadre, has been appointed as the additional secretary in the cabinet secretariat. Correct? Take a note of this. One more appointment, remember, right? Apart from this, do remember 1 and 2 appointments more, such as your N. Saravana Kumar, appointed as the vice chairman of Delhi Development Authority. Then second appointment, remember, Mugdha Sinha, appointed as the managing director of India Tourism Development Corporation. Apart from this, then fourth appointment, remember, or third appointment, remember, of Sanjeev Shankar, appointed as the financial advisor and additional secretary of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Next is government has appointed IAS officer Jitendra Srivastav as the chairman and managing director of REC Limited. What is REC? Rural Electrification Corporation Limited. So ACC, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the appointment of IAS Jitendra Srivastav as the chairman and managing director of New Delhi based REC Limited. He will be succeeding Vivek Kumar Devangan. Next is acquisition and mergers. NABARD has acquired 10% stake in 24/7 Money Works Consulting. Right, 10% stake has been acquired.
correct, in Chennai, Tamil Nadu based agri fintech startup that is 24/7 Money Works Consulting Private Limited. Next is science and technology students. INS Surat has successfully tested MRSAM, that is medium range surface to air missile in the Arabian Sea, right? And it is which naval ship? It is INS Surat that tested this. Correct? Take a note of this. And also this medium range surface to air missile, also known as Barak 8, right? As you can see it in the picture here, it was tested in the Arabian Sea. It can hit targets up to 70 kilometers. Correct? Next is China. They have launched Shenzhou 20 crude mission to Tiangong space station. This Tiangong space station is the space station of China, and recently China, they have launched their crude mission here to Tiangong space station. This Tiangong space station is also known as the Heavenly Place, Heavenly Palace. There were 3 crew, right? Who are they? Commander Cheng Dong, Cheng Zhongri, and Wang Zi, right? These are the 3 crew that went to the Tiangong space station, also known as the Heavenly Palace, right? Next is environment. ICAR, Indian Council of Agriculture Research, its arm NBFGR, PAGR. What is PAGR? PAGR is your Peninsular Aquatic Genetic Resources, right? So its center has unveiled 2 new freshwater fish species in the Western Ghats. These are the 2 fish species that has been discovered. What are they named? Labio uru and Labio chakida. These are the 2 species of these fishes, right, that has been recently discovered. These are the freshwater species discovered in Western Ghats. Next is related to sports. Indian Grandmaster Koneru Humphrey has clinched the FIDE Women's Grand Prix 24-25 that was held in Pune. Correct? I repeat, FIDE Women's Grand Prix for 24-25 was held in Pune, Maharashtra in India from 13th to 24th of April, and Koneru Humphrey, correct, has clinched the title here. Take a note of this. Next is former ISRO chairman and Padma awardee K. Kasturi Ranjan, as you can see him in the picture, has recently passed away. He was a Padma awardee, passed away at the age of 84 in Bengaluru, Karnataka, born in 1940 in Ernakulam, Kerala. Also remember, he led ISRO as their chairman from 1994 to 2003, and he was honored with India's top civilian awards for his contribution in the field of science and technology. With Padma Shri in 1982, with Padma Bhushan in 1992, and with Padma Vibhushan in the year 2000. Correct? Padma Shri, it is the 4th highest civilian award. Padma Bhushan is the 3rd highest civilian award, and Padma Vibhushan is the 2nd highest civilian award. Correct? Next is former Australian batter Keith Stackpole has recently passed away. Directly remember this. Next is important day, students. World Malaria Day observed on 25th of April. This day is observed across the globe as an initiative of the World Health Organization to raise awareness and promote actions for the prevention, control, and elimination of malaria, because we know malaria is caused by the bite of mosquito. There is a theme for this day, theme being Malaria Ends With Us, Reinvest, Reimagine, and Reignite. This year it was, or for the first time, this day was observed in 2008. If we talk about World Health Organization, this is the organization that observes this day. Then who is the Director General of World Health Organization? Dr. Tedros Ghebreyesus. Headquarters is in Geneva, Switzerland, founded in 1948. Next is International Delegates Day, observed on 25th of April. This day is observed basically to create awareness about the role of representatives and the delegates of the member states to the United Nations. This year it was the 6th edition or 6th International Delegates Day that was observed. Take a note of it. Next is World Penguin Day. We observe this day on 25th of April, and it is to raise awareness about the environmental struggles and the conservation of the habitat of the penguin, observed on 25th of April, and it is being observed since 1972. So that's all for the day, students. Now let's move to revision part that will be beneficial for your learning. First question is, identify the company that recently signed a memorandum of understanding with GRSE, that is Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, for 5 years to strengthen India Defence and Aerospace.
capabilities. It is Apollo Micro Systems. This collaboration will address the need of the present and the future need of the Indian Defence Forces. Next, who has been recently selected as the pilot for the Axiom 4 mission, becoming the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. So, Group Captain Subhanshu Shukla was appointed as the pilot for the Axiom 4 mission, and he became the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. And this Axiom space mission is of NASA. Next, mention the defense system that DRDO successfully conducted 3 consecutive flight trials from Integrated Test Range Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is very short range air defense system. These tests were conducted against high speed targets flying at a very low altitude. Next, the Indian Navy launched its 9th ammunition cum torpedo cum missile barge called Landing Ship Ammunition 23 at Suryadipta Projects Private Limited in Thane, Maharashtra. This ACTCM barge was designed and constructed by which organization? It was by MSME Shipyard in collaboration with the Indian Ship Designing Firm and Indian Shipping Registry or Indian Register of Shipping. Next, identify the navigation satellite that was launched by the Japan Aerospace Exploration Agency JAXA using their HC rocket from the TNSC in Japan. So, name that navigation satellite. It is Michibiki 6. Next, and one more thing, students, here remember, question can also be asked, this S3 rocket is of which organization? It is of Japan country, and the organization here is JAXA. Next is, during the 92nd USA spacewalk, which astronaut set the new record of a total spacewalk time by women? She is Sunita Williams, and she was recently brought back to from International Space Station to Earth, right? And along him, who was the other astronaut? Butch Wilmore. It was brought back by Crew 9 mission, and it was Dragon capsule that brought them back here. Next, identify the super application that was recently introduced by the Ministry of Railways to provide one-stop solution for Indian Railways services. It is Swarel. It is Swarel. Next, the latest version of the finite element analysis of structure, that is FEAST software, was launched by Dash at the 8th National Finite Element Developers Meeting at the IIT Hyderabad in Telangana. It is by ISRO, Indian Space Research Organization. Next is, how many MQ-9B Predator drones were procured from General Atomics USA as approved by the Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Narendra Modi for a strategic defense projects in Feb 2025. It is 31 MQ-9B Predator drones that were procured here. And this deal includes 16 Sky Guardians and 15 Sea Guardian variants. Next, name the rocket that was launched by the Russia from Plastek Cosmodrome to deploy military satellites into orbit. It is Soyuz 2.1V rocket. Next, United States Navy successfully tested the high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system, that is Helios system, using the Algerburg class guided missile destroyer. Question asked is, this Helios system was developed by whom? It was developed by Lockheed Martin Group. Next, in Feb, Spin launched, they developed an innovative method of Dash to launch satellites into the low Earth orbit without traditional rocket fuel. So in Feb, this Spin launch, this is a traditional method which is using the centrifugal force in order to rotate the satellites at a very high speed and then launch it into the space. So this is an innovative method developed by the electric powered kinetic launch mechanism. Next, identify the company that recently delivered their latest anti-tank 4 weapons to the Indian Armed Forces in February month. It is Saab AB. It is Sweden-based company. Next, in Feb, the Shenzhou 19 crew on China's Tiangong space station successfully produced oxygen, right? And this was done through artificial photosynthesis. Quite an interesting and important question. So using artificial photosynthesis, oxygen and rocket fuel were produced at the Tiangong space station, that is the space station of China. Next is, which company successfully completed the 29th New Shepard flight in Feb, simulating lunar gravity for the first time? It is Blue Origin. Take a note of this, and this Blue Origin is of Jeff Bezos. Next, name the drone carrier warship that was commissioned by Iran for the first time into the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in the Persian Gulf.
So what is the name of the drone carrier? It is Shahid Bagheri. Shahid Bagheri. This is the name of the drone carrier and it is of Iran. Next, identify the cryogenic engine that ISRO successfully carried out the ignition trial for the upper stage of launch vehicle Mark 3 in Feb 2025. It is CE-20. Take a note of it. And as per ISRO, the multi-element igniter within the engine has successfully simulated the engine ignition in the vacuum condition of space. Next, identify the organization that recently collaborated with the CNSA, that is China National Space Administration, to include Pakistan's first lunar rover in the China's Chang'e mission scheduled for 2028. So, which is that organization that collaborated with CNSA? It is the Space and Upper Atmosphere Research Commission of Pakistan. Next, which Indian institute collaborated with ISRO's Inertial System Unit to design and develop semiconductor chips, that is indigenous RISC-V controller for space application by the name IRIS, that is indigenous RISC-V controller for space application, and it was developed in Feb. Which is that IIT? It is Indian Institute of Madras. Next, in Feb, SpaceX Falcon 9 rocket launched a batch of 21 Starlink satellites. It was launched into the low Earth orbit, marking a significant step in expanding its satellite internet network. And in India, they are partnering with Airtel and Jio to provide internet services using the Starlink. Next, in Feb, Indo-Russian Rifles Private Limited, they have delivered 40,000 units of what? They delivered the 40,000 units of AK-203 assault rifles to the Indian Army, and these rifles will be delivered or they will be manufactured at the Korwa Ordnance Factory, that is in Amethi in Uttar Pradesh. Next, which organization partnered with the Aeronautical Development Agency to develop high strength, high toughness, special grade steel, that is MDN 100 for aerospace applications? It is Mishra Dhatu Nigam Limited. Moving on, Indian ship design firm along with which organization designed and built the Indian Navy 8th missile cum ammunition barge launched on 14th of Feb in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So which is that Indian ship design firm? It is IRS, Indian Register of Shipping. Next, identify the organization that developed and tested India's 4th generation deep ocean submersible Matsya 6000 under the Samudriyan project in Feb 2025. It is National Institute of Ocean Technology, that is NIOT. Next, identify the spectrograph that was used by the scientists at the Physical Research Laboratory to discover the exoplanet. This is the exoplanet in Feb 2025. So, name that spectrograph. It is which spectrograph that was used here? So it is your Advanced Radial Velocity All Sky Research 2 that was used to discover this exoplanet. Next, name the new communication satellite that was launched by China using the Long March 3B carrier rocket into geosynchronous transfer orbit to replace China Sat 10. So name that communication satellite. It is China Sat 10R. So China Sat 10R will be replacing China Sat 10. Next, which mission data was used to generate the first ever detailed geological map of the moon's south pole in Feb 2025? It is Chandrayaan 3. Take a note of this. First ever detailed geological map of the moon's south pole. Moving on, identify the missile that was jointly tested by DRDO and Indian Navy at the ITR Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is Naval Anti-Ship Missile Short Range. Next, students, let's move to the homework section. First question. Recently, tell me who has been appointed as the Vice President at AIIB. Second question. Who has been appointed as the Director General of ICAR? Third question. Who has been appointed as the Deputy Chief Financial Officer of IndusInd Bank? Fourth question. Tell me recently who has been appointed as the Law Commissioner chairperson, Law Commission's chairperson, and which is this Law Commission? Tell me why this is implemented. Tell me that also. Fifth question. Recently tell me who has been conferred with the Gurudev Kalicharan Brahma
award. I repeat, who has been honored with the Gurudev Kalicharan Brahma Award for 2025. So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation. I am looking at the homework section and I am seeing that hardly few students are commenting below. Students, I want maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट की ऑन इनलैंड वाटरवेज। देन हम बात करेंगे ओडिशा का सिमलीपल, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है इंडिया का। देन टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे, किसने टॉप किया वर्ल्ड में एंड इंडिया से किसने टॉप किया। देन हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने ज्वाइन किया ग्लोबल नेटवर्क टू हेल्प कंट्रीज कोप विद द क्लाइमेट चेंज। ऑल दीज टॉपिक्स एंड इसके अलावा काफ़ी और न्यूज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, तो एंड तक बने रहिएगा, राइट। एंड इनको डेली बेसिस पे ज़रूर देखा करो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इंडिया के रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट की ऑन इनलैंड वाटरवेज, राइट। तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया नोएडा यूपी बेस्ड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिन्होंने बताया कि जो कार्गो मूवमेंट है इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, वो रिकॉर्ड उन्होंने टच किया ऑफ 145.5 मिलियन मेट्रिक टन, राइट। ये है फॉर द ईयर 24-25। अगर हम डाटा देखें 13-14 का, राइट, दिस इज क्लोज टू 14 पॉइंट और ऑलमोस्ट 18.1 मिलियन मेट्रिक टन। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स यहाँ पर हमें डाटा होता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। तो ये क्या है, रीज़न बीइंग कि हमारे जो नेशनल वाटरवेज हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 68, 73, 110। इससे हुआ क्या है कि कार्गो मूवमेंट अच्छी हो गई है। कार्गो मूवमेंट अच्छी हुई मतलब हमारा जो लॉजिस्टिक है वो बेटर होती हुई दिखी है, करेक्ट। कनेक्टिविटी अच्छी बनी है, कनेक्टिविटी अच्छी बनी है तो जो गुड्स हैं वो ट्रैवल हमारे अच्छे से कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पा रहा है, करेक्ट। तो यही हम देख रहे हैं कि IWAI के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। यहीं पे हम देखें कि जो कार्गो ट्रैफिक है इन लास्ट 10 ईयर्स, सबसे ज़्यादा वो हमें कोल, आयरन ओर फाइन्स, सैंड एंड फ्लाई ऐश, ये सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हुआ दिखा ऑफ 68%। इसी के अलावा अगर हम देखें कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए कि इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा दिया जाए, जैसे जलवाहक, ये आपका कार्गो प्रमोशन स्कीम है। इसका इनिशिएटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को प्रमोट कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें गुड्स को नेशनल वाटरवेज के थ्रू। देन एक्सटेंशन ऑफ द टनेज टैक्स टू इनलैंड वाटरवेज, की जो टैक्स है उसको स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल बनाया जा सके, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं उसको जो आपका बिजनेसमैन है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर सके। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आ सके। इसी के अलावा हम देखेंगे पोर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात की गई, डिजिटाइजेशन के ऊपर बात की गई, एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाने की बात की गई, करेक्ट। एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ मिलकर एंगेजमेंट की यहाँ पे बात की गई ताकि नेशनल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज को यहाँ पे ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स,
ओडिशा का सिमलीपाल, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया इंडिया का 107th नेशनल पार्क, एंड ये ओडिशा से सेकंड नेशनल पार्क रहने वाला है। इससे पहले पहला कौन सा नेशनल पार्क था, वो तो आपका भीतरकनिका, भीतरकनिका, राइट, ये पहला था। एंड अब सेकंड कौन सा है, वो है ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क, करेक्ट। इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 107th नेशनल पार्क। टेक अ नोट ऑफ दिस, करेक्ट। तो अब कितने वो नेशनल पार्क हो गए, 107 नेशनल पार्क हैं टोटल। ओडिशा की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर कौन है, मोहन चरण मांझी। हेडक्वार्टर, इसका कैपिटल क्या रहेगी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड एक और चीज, दिस न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन ओडिशा नाउ। 845.7 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इंपॉर्टेंट न्यूज स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। ये रैंकिंग बताती है कि एशिया रीजन में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। ये 13वां एडिशन था इस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। सबसे पहले हम देख लेते हैं किन्होंने टॉप किया, तो शिंगवा यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना का फर्स्ट, सेकंड पे पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ पे नैंगियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड फिफ्थ पे आ जाता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो कि जापान में है, राइट। ये थी एशिया की जो रैंकिंग रिलीज की गई है। अगर हम बात करें हमारी इंडिया की, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है एंड वर्ल्ड में उसकी क्या रैंक रहेगी, तो हम देखें 38 पोजीशन पे आ जाती है IISC। ये है कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके बाद 111 पोजीशन पे अन्ना यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई तमिलनाडु में। देन 131 पोजीशन पे IIT इंदौर आ जाता है, ये कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में। देन इसके बाद आ जाती है 140th पोजीशन पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, कोट्टयम केरला में। इसके बाद आ जाते हैं 146 पोजीशन पे शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, ये कहाँ पर है, बजोल हिमाचल प्रदेश में, करेक्ट। तो इंडिया से टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, IISc बेंगलोर। वर्ल्ड में ये 38 पोजीशन पर है। नेक्स्ट आ जाते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन किया टू हेल्प द कंट्रीज कोप विद क्लाइमेट चेंज। देखो अभी एक इनिशिएटिव का ध्यान रखना है आपको, उस इनिशिएटिव का नाम है आपका सेंटियागो नेटवर्क। क्या नाम है, लेट मी शो यू ओनली, सेंटियागो नेटवर्क, करेक्ट। तो ये नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2019 में, जिसका एम है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को, नेटवर्क्स को, एक्सपर्ट्स को साथ में लाएं एंड कैसे जो क्लाइमेट चेंज से जो डैमेज हमें दिख रहा है, जो लॉस होता हुआ दिख रहा है, राइट, उससे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं हम उसको कैसे अवॉइड कर सके, मतलब खत्म कर सके, मिनिमाइज कर सके, करेक्ट। तो ये था सेंटियागो नेटवर्क एंड अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। इससे होगा क्या, इन्होंने इस ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया, इससे होगा क्या, जो कंट्रीज क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर बेटर सॉल्यूशंस कैसे इससे टैकल किया जाए, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ बेटर की जा सके, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, करेक्ट। एंड UNDP की बात करूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में। अगर मैं UNDP की बात करूँ तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे एकीम स्टेनर, ठीक है। 1965 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे, EMF एल्डेवीज म्यूचुअल फंड, राइट, इसको हम एल्डेवीज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड भी कहते हैं। ये एक सब्सिडरी है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एल्डेवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, एंड इनके द्वारा इंडिया का पहला BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड को लॉन्च किया गया है, राइट। ये आपका ये पहला इंडेक्स फंड है जो ऑफर करेगा एक्सपोजर टू द BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स, जो आपके BSE 50 के टॉप 20 कंपनीज होगी उसका ये कंपाइलेशन रहेगा, एंड जो 6 महीने का एवरेज मार्केट कैप रहेगा, एंड उसमें जो टॉप 20 कंपनीज यहाँ पे आएंगी BSE 500 की, उसका ये इंडेक्स यहाँ पे बनाया गया है। मिनिमम 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, एंड इसके बाद इन द मल्टीपल ऑफ 1 यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। कोई एग्जिट लोड नहीं है, अगर 30 दिन के बाद यहाँ पे पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर्स रहेंगे, उनका नाम भी याद रखेंगे, भावेश जैन एंड भारत लोहोटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। RBI ने कैंसिल करा लाइसेंस ऑफ अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू कैपिटल एंड कंप्लायंस इश्यूज, राइट। आई रिपीट, RBI ने बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया ऑफ अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
मर्यादित, करेक्ट। इससे क्यों किया क्या है? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैपिटल, इनके पास पैसा नहीं है, पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्टस एंड नॉन कंपाइलेंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स। अब इसके अंदर ये लिक्विडेट हो जाएंगे एंड जो कस्टमर्स हैं 5 लाख रुपए तक का वो पैसा यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। एंड बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 91% जो जनता है उनको अपना 100% यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, मतलब 5 लाख से कम का ही उनका डिपॉजिट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे स्टूडेंट्स। इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाडिया, इनको कन्फर किया गया फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, राइट। ये एक इंडियन फिल्म मेकर है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है पायल कपाडिया को विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, करेक्ट। ये है ऑफिसर डेंस ऑर्डर डेस, ये अवार्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, करेक्ट। ये हांगकांग चाइना बेस्ड है। इन्होंने अनाउंस किए अवार्ड्स ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 अवार्ड्स। ये रीजनल असेंबली न्यू दिल्ली में हुई थी जिसके दौरान ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए एंड इंडिया के 3 एयरपोर्ट्स को यहाँ सम्मानित किया गया, जिसमें से आपका हुबाली एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, हुबाली एयरपोर्ट है कर्नाटका में, हुबाली में, राइट। इसको प्लेटिनम स्टेटस से सम्मानित करा गया है। बाकी 2 एयरपोर्ट और कौन से हैं? पहला तो हो गया हुबाली एयरपोर्ट, दूसरा आ जाता है केमगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड तीसरा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, कोची केरला में। तो ये 3 वो एयरपोर्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया, जिसमें से प्लेटिनम स्टेटस किसको दिया गया है? हुबाली एयरपोर्ट को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। सुनील भारती मित्तल, इन्होंने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब को, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वहाँ पे जॉब ग्रोथ की जा सके, मतलब जॉब प्रोवाइड की जा सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, वहाँ पे स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके, ताकि उन अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को, उन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को ग्रो किया जा सके, राइट। तो सुनील भारती मित्तल ने यहाँ पे ज्वाइन किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब को। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स भुवनेश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। UIDAI क्या है? UIDAI है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे अमितेश कुमार सिन्हा को। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट याद रखेंगे अभिषेक सिंह की, राइट। ये अमितेश कुमार सिन्हा को सक्सीड करेंगे। देन अभिषेक सिंह, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, करेक्ट। तो ये 2 अपॉइंटमेंट हो गई। तीसरी अपॉइंटमेंट याद रखेंगे के पाठक, राइट। के पाठक को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है। इसी के अलावा एन सरावना कुमार, इनको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है DDA का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। देन इनके बाद याद रखेंगे मुग्धा सिन्हा को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, एंड सुमन बिल्ला को ये रिप्लेस करेंगी। देन इसके बाद याद रखेंगे संजीव शंकर, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सेक्रेटरी, कहाँ का? इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे इनको। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया IAS ऑफिसर जितेंद्र श्रीवास्तव को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये IAS ऑफिसर हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये किनको सक्सीड करेंगे? विवेक कुमार देवांगन को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। नाबार्ड ने एक्वायर किया 10% स्टेक इन 24/7 मनी वर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक एग्री फिनटेक है, मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी रहेगी। चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है एंड इसमें 10% नाबार्ड के द्वारा एक्वायर किया गया है। इसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक पर। INS सूरत, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, कहाँ पर? अरेबियन सी में इसको टेस्ट किया गया, राइट। इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या रहेगा? बैरक 8, करेक्ट, बैरक 8। इसकी रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी, राइट। एंड INS सूरत के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। अभी चाइना ने एक क्रूड मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रहेगा शेंजू 20। ये टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे लॉन्च किया गया है। टिएंगोंग स्पेस स्टेशन ये आपका स्पेस स्टेशन है, चाइना का पर्सनल
स्पेस स्टेशन, एंड इसको लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया इस सेंजू 20 क्रूड मिशन को। एक और चीज़ याद रखेंगे, टिएंगोंग स्पेस स्टेशन है, इसका एक और नाम है जिसको हेवनली पैलेस के नाम से जानते हैं, हेवनली पैलेस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन क्रू हैं यहाँ पे, कौन कौन है, कमांडर शेंडोंग, शेनजोंगरी एंड वांगजी। इसके बाद आप इन्वायरमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का NBFGR का PAGR क्या है, पेनिनसुलर एक्वेटिक्स जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट, इसका सेंटर है। इन्होंने 2 नई फ्रेश स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में। क्या नाम रहेगा इसका, लेबियो उरु एंड लेबियो चिकीडा। ये 2 फिशेज डिस्कवर की गई हैं, फ्रेश वाटर फिशेज, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, इन्होंने जीत लिया है 5 वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स 24-25 को। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मर इसरो चेयरमैन एंड पद्मा अवॉर्डी के कस्तूरी रंजन जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 84 की एज में इनका निधन हुआ, बेंगलुरु कर्नाटका में। एर्नाकुलम केरला में 1940 में इनका जन्म हुआ था। एंड ये चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के 1994 से लेके 2003 तक। इनको अगर मैं बात करूं, पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 1982 में, पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1992 में, एंड पद्मा विभूषण से सन 2000 में। पद्मा श्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्मा विभूषण 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बैटर कीथ स्टैकपॉल, इनका निधन हो गया, डायरेक्ट याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया कॉज होता है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, इसके प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है ना, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार सन 2008 में इसको ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा थीम याद रखेंगे, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट इसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। 25 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करते हैं हम। डेलीगेट्स, राइट, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए जो मेंबर स्टेट्स हैं टू द यूनाइटेड नेशन, उनके जो डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार इसका 6ठा एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे पे, 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। पेंगुइन्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इनके हैबिटेट को जो लॉस है, राइट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये ठंडे एरिया में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, आइस मेल्ट हो रही है, तो उससे इनके हैबिटेट को काफ़ी खतरा है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। किनको अभी सेलेक्ट किया गया पायलट फॉर पायलटिंग एक्सियोम 4 मिशन, एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बने टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अ प्राइवेट मिशन। तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, मेंशन द डिफेंस सिस्टम, जो कि DRDO के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट स्टाइल किए गए फ्रॉम ITR चांदीपुर ओडिशा। तो वो कौन सा एयर सिस्टम रहेगा, वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया इट्स 9th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार, जिसका नाम है लैंडिंग शिप एम्यूनेशन 23 एट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने, महाराष्ट्र। ये जो ACTCM बार्ज है, इसको डिज़ाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसके द्वारा, MSME शिपयार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेविगेशन सैटेलाइट, जो कि लॉन्च की गई बाय JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यूजिंग द H3 रॉकेट फ्रॉम जापान। तो ये H3 रॉकेट भी जापान के JAXA का ही है, राइट। तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का, नेविगेशन सैटेलाइट का, वो है मिचिबिकी 6। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 92nd US स्पेस वॉक, किस एस्ट्रोनॉट ने अभी एक रिकॉर्ड सेट किया ऑफ द टोटल स्पेस वॉक टाइम बाय अ वीमेन। तो ये है सुनीता विलियम्स, एंड ये 9 मंथ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थी अलॉन्ग विद बुच विल्मोर। इनको वापस लाने के लिए जो मिशन यूज़ किया गया वो है क्रू 9 मिशन। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को यूज़ किया गया था इनको वापस लाने के लिए, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सुपर एप्लीकेशन, जिसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो भी इंडियन रेलवेज की सर्विसेज हैं वो यहाँ से एक्सेस की जा सके। तो क्या नाम रहेगा इस एप्लीकेशन का, वो है स्वरेल। नेक्स्ट, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर फीस सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 8वें नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग के द्वारा एट IIT हैदराबाद इन तेलंगाना।
नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को भी प्रोक्योर किया गया जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी। तो कितने MQ-9B ड्रोन्स को प्रोक्योर किया गया फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स? तो वो है 31 ड्रोन्स को यहाँ प्रोक्योर किया गया, राइट। 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे, 15 आपके सी गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे। नेक्स्ट, उस रॉकेट का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय रशिया फ्रॉम प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम टू डिप्लॉय मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो वो है सोयूज 2.1V रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हाई एनर्जी लेजर इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्वेलेंस सिस्टम हीलियोस को। करेक्ट। पूछा जा रहा है ये जो हीलियोस सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट, इन फेब स्पिन लॉन्च, ये इन्होंने डेवलप किया एक इनोवेटिव मेथड टू लॉन्च द सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। जैसे क्या है, बेसिकली यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट्स को रिवॉल्व किया जाएगा एंड सडनली यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पावर्ड काइनेटिक लॉन्च मैकेनिज्म है जिससे इसको काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इसको एकदम काफ़ी स्पीड में रोटेट करके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा एंड फर्दर ऊपर जाके एक पॉइंट पे ये अपनी इंजन को फ्यूल को ऑन करेगा। काफ़ी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे टू लॉन्च द सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया अपना लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब 2025। तो यह है साब AB। नेक्स्ट, इन फेब शेंजू 19 क्रू ऑन चाइनाज टिएंगोंग स्पेस स्टेशन सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे डेवलप किया गया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से। एंड हम जानते हैं ये टिएंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? ये चाइना का है एंड शेंजू के 19 के क्रू ने ये किया, तो ऑक्सीजन को यहाँ प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट को स्टिमुलेटिंग द लूनर ग्रेविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है ब्लू ओरिजिन। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस ड्रोन कैरियर वॉरशिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया बाय ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ऑन द पर्शियन गल्फ। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है शाहिद बघेरी। ये है वो ड्रोन कैरियर वॉरशिप। नेक्स्ट, उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम बताओ दैट इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द इग्निशन ट्रायल उसके अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इन फेब 2025। तो क्या नाम रहेगा उसका? CE-20। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने कोलैबोरेट किया CNSA के साथ ताकि पाकिस्तान की पहली लूनर रोवर को भेजा जा सके इन द चैंग-E 8 मिशन जो कि 2028 में लॉन्च किया गया। तो पाकिस्तान की ये रिसर्च या फिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी रहेगी, राइट। तो ये है द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने अभी कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन किया जा सके जिसका नाम है आयरिस। ये आप उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा IIT है? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, अभी फैल्कन 9 स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया बैच ऑफ 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एक्सपेंडिंग द सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। और स्टारलिंक ने ही इंडिया में एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया ताकि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। एंड बेसिक अफोर्डेबल तो नहीं होगा, कहने की बात है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी इंडियन आर्मी को। ये जो राइफल्स हैं ये कहाँ बनाई जा रही हैं? ये बनाई जा रही हैं कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री में। ये कहाँ पर है? ये है अमेठी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन? तो वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिज़ाइन किया एंड बिल्ड किया इंडियन नेवी का 8वां मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था? तो यह है नेशनल, इसका आंसर होगा इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। इन्होंने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है इस MCA बार्ज को। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया एंड टेस्ट किया 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट इन फेब 2025। तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रोग्राफ जिसको यूज़ किया गया बाय साइंटिस्ट एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी टू डिस्कवर द एक्सोप्लैनेट। ये वो एक्सोप्लैनेट रहेगा। तो क्या वो स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्नोलॉजी है? वो है एडवांस रेडियल वेलोसिटी ऑल स्काई सर्च 2।
नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा थ्रू लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ताकि रिप्लेस किया जा सके चाइना 10 सेट को, चाइना सेट 10 को। तो चाइना सेट 10 को रिप्लेस करेगा चाइना सेट 10R। नेक्स्ट, किस मिशन डाटा को अभी यूज किया गया टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल? तो चंद्रयान 3 इंडिया का मिशन है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके डाटा को यूज किया गया ताकि एक जियोलॉजिकल मैप, काफी डिटेल जियोलॉजिकल मैप को डेवलप किया जा सके ऑफ द मून साउथ पोल। Next students, let's move to the homework section. First question, recently tell me who has been appointed as the vice president at AIIB. Second question, who has been appointed as the director general of ICAR? Third question, who has been appointed as the deputy chief financial officer of IndusInd Bank? Fourth question, tell me recently who has been appointed as the law commissioner chairperson, law commission's chairperson, and which is this law commission? Tell me why this is implemented, tell me that also. Fifth question, recently tell me who has been conferred with the Gurudev Kalicharan Brahma Award. I repeat, who has been honored with the Gurudev Kalicharan Brahma Award for 2025. So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation. I am looking at the homework section and I am seeing that hardly few students are commenting below. Students, I want maximum participation from all the students watching this video.